In our third part of the discussion of the fraction chapter, we will discuss about the comparison of the fraction, arranging the fraction in ascending order, arranging the fraction in descending order, and further we will discuss about the operation on fraction. These discussions we will discuss in our part third discussion of the comparison of fractions. So before starting the discussion, we are going to talk about the comparison of the fraction. So what is the comparison of the fraction? Suppose we took the example 3 by 5 and another fraction 4 by 7. Here you may see both having different numerator as well as different denominator. दोनों के पास अलग अलग numerator है और अलग अलग denominator है. यदि दोनों के numerator और denominator अलग अलग होंगे तो आपको उनका तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना. चलिए करिए. 3 7 जा, जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ लिखेंगे. 3 7 जा 3 into 7 and here 4 into 5. 3 7 जा 21, 21, 5 चौ 20. कौन बड़ा है? 21. तो 21 बड़ा है. सो फॉर वी विल से दैट 3 by 5 बड़ा है, 4 बटे 7 छोटा है, 4 by 7 छोटा है. ये तो था डिस्कशन when the different numerator and different denominator. Now we will discuss when same numerator. Comparison of the fraction when same numerator like 3 by 5, 3 by 8. यदि दोनों के न्यूमरेटर सेम होंगे तो जिनका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा. मतलब whose denominator will be smaller, whose denominator will be smaller, that fraction will be bigger. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा. जब दोनों के सेम डिनोमिनेटर होंगे तब कौन सा फ्रैक्शन छोटा और कौन बड़ा होगा. जैसे 3 by 5, 8 by 5. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम. यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन बड़ा होगा. when denominators are same, then fraction having different having bigger numerator will be bigger. यदि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जिस फ्रैक्शन का when the denominators are same then fraction having bigger numerator will be bigger. जब denominator when denominators will be smaller when the numerator will be same then whose denominator will be smaller that fraction will be bigger. And in the comparison of the fraction when having different numerator and different denominator we need to cross multiply that, and we did it. We have to write 3 into 7 in this side and 5 into 4 in this side, and then the comparison will take place and we will tell who is smaller and who is bigger. Now we have to discuss about arranging the fraction, the next topic, arranging the fraction in ascending or descending order. So children, we are going to discuss about it. So arranging the fraction in ascending or descending order, this we will clarify with an example. I took here an example. We have to arrange 1 by 3
2/3, 5/6 and 7/9 in ascending order. In ascending order we have to arrange it. So we will take the LCM of 3, 3, 6 and 9. Take the LCM. 3 1 ja 3, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. Now again 3 से 1 1 2 3, we can cross it by 1 2 also, 1 1 1 1. So the operation is over. Now the LCM will be here, 3 multiplied by 3 multiplied by 2, 2 3 ja 9, 9 2 ja 18. So we got 18 here, which is the LCM of these all. Now after getting the LCM we have to write 1/3 here, 2/3 here, 5/6 here, 7/9 here. We can see in 1/3 we have to multiply by 6 in the numerator as well as the denominator. We will get 1 6 ja 6, 6 3 ja 18. 2/3 6, because we have to make the denominator as 18, so we will multiply it by 6 again. 6 2 ja 12, 6 3 ja 18. 5/6 3, 15, 18. 7/9 2, 14, 18. So we got here 6/18, 18/18. How can we 6 2 ja 12, sorry, 12/18, 15/18 and 14/18. मतलब हमने इन सारे फ्रैक्शन को लाइक बना लिया. ये अनलाइक थे, हमने इसको लाइक में कन्वर्ट कर लिया बाय टेकिंग द LCM. जैसे ही हमने इसको लाइक में कन्वर्ट किया, वी विल नंबर इट, कौन छोटा है कौन बड़ा है. दिस विल कम ऑन द नंबर फर्स्ट, दिस विल कम ऑन द नंबर सेकेंड, दिस विल कम ऑन द नंबर थर्ड, दिस विल कम ऑन द नंबर फोर्थ. आप देख सकते हैं ये 6 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 15 है. तो ये इस ऑर्डर में है. मतलब सबसे छोटा हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ, नंबर 1 पे आएगा 6/18. इससे बड़ा कौन है, 2 पे 12/18. 3 पे कौन आएगा 14/18. 4 पे कौन आएगा 15/18. ये हमारा अरेंजमेंट रहा. अब 1 किसका